go with PPT for them. Okay. So Rahulji, we should start. Yes, we are live. We can go ahead. Sure. Okay, Thank you. Namaskar. I would like to extend very warm welcome on behalf of Ministry of Education flagship program Unnat Bharat Abhiyan National Coordinating Institutes IIT Delhi. This is 18th webinar episode on understanding various modes of tribal development and protecting their indigenous culture from external influence. So we have respected Professor Sri Krishna Roy from National Institute of Technology, Durgapur, as a regional coordinator for Unnat Bharat Abhiyan. He will moderate this webinar session. We have three distinguished speakers from West Bengal. They will be introduced by today's moderator. The participants who have joined through online platform, thank you for taking time to join us today. This webinar will be helpful to identify the research gap, indigenous community strength and resources, development challenges. You can ask your questions through YouTube chat box. Our speakers will answer after the discussion. So now I would request to respected Professor S.K. Roy sir to continue this session. Over to you, sir, please. Thank you, Chankar Bhushan Pandey and all the speakers who have taken time to be here on this very important and pertinent topic. Since this topic is very much related to our Sanskriti, and when we talk about the Bharatiya Sanskriti, the one thing which comes in my mind that these people from the Janajatiya Samudaya, these people have been the real Purodha, the real flag bearers of our Sanskriti. So I will be with the following the gist of the seminar of this, especially the webinar. I would be bilingual. I would be just praising our Hindi and the regional languages. So in this regard, I think nobody has problem with the Hindi language or the regional languages. All the speakers are comfortable in Hindi and other regional languages, because I can see the speakers are the very first speaker who is from Santhali department. So on this pertinent topic, I would like to start with Shripati Tuduji. Shripat Tuduji is an assistant professor, Department of Santhali at Sidhu Kanu Birsa University, Purulia. And at present, he is on deputation at Institute of Language Studies and Research, ILSR, Kolkata, Higher Education Department, Government of West Bengal. He has He has participated in 7 national seminars and 1 international seminar. He has acted as a resource person and experts in multiple events and had organized multiple seminar, training programs and workshops. He had published 2 books, editor of journal, published 4 book chapters and 8 research publications. He had also participated in multiple literary activities, and the most fascinating thing about his career, what I can see, is he is the recipient of Sunday Times Literary Award, Kolkata Literary Award 2022 on 5th November 2022. So with this illustrious career, I request Shripat Tuduji to put across his views on the very pertinent topic. Again and again, I'm saying it's pertinent because recently we have celebrated Janajatiya Gaurav Divas, inaugurated by Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji. Last year it was in Bhopal, and this time we all the higher education institute, we all have celebrated the Janajatiya Gaurav Divas with full fervor and enthusiasm. So in the same line, and Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have been organizing these series of webinars also under Unnat Bharat Abhiyan. And in this series,
today's topic, I repeat the topic for today's webinar, which is understanding various modes of tribal development, protecting their indigenous culture from external influence. So it's very, very important, very, very pertinent topic, and we have very experts here to put across their views and enlighten us on this topic. So in this series, the first, Professor Sripat Tuduji, and now this stage for Sripat Tuduji. Sripat Tuduji. Thank you, sir. And at the beginning of my discussion, I would like to thank team IIT Delhi and team IIT Durgapur. And today's my topic is impact of globalization on tribal traditional social system and Santali language in 21st century in India. Johar, at the beginning of the discussion, I am going to introduce to all of you about Santal society and its traditional social structure, popularly known as Majhi Pargana system. About 10 million population are residing in Nepal, Bangladesh and India, and center of origin of Santals are thought to be India. Their presence can be found vividly from 1500 AD. They have their own traditional calendar, legal system, rich culture, nature-based worship system, and creation of myth and traditional social administrative structure or social system which was self-independent back with Manhasa, that is common land of village which allotted for the adjustment of annual cost interacted during the period to body member of Majhi system. In nature, throughout the West Bengal, Jharkhand, Odisha, and Bihar are almost same since immemorial. Recent studies reveal the existence of Santal date back to 60,000 to 63,000 years. Santals are the major tribal group of West Bengal with a population of around 35 lakh. Large number of Santals are reside at the district of Bankura, Purulia, Jhargram, Paschim Mednipur, Birbhum, Murshidabad, Malda, North and South Dinajpur. Santali culture is the most enriched culture among the tribals of Chotanagpur Plateau of eastern India. And Santali language is the mother language of all tribal languages, belongs to the Munda subfamily group of Austroasiatic language family. Santals have a civilized cultural history of 1,000 years old. Social awareness and human morality are the too high among the Santals due to their social structure of Majhi Pargana system. Majhi is the headman of a Santal village, and there are also 5 designated persons who help the Majhi to run the village administration smoothly. They are Jogmaji, Paranik, Godet, Naike, Kudam Naike, and they have some specific social duties throughout the year, with a few bigha of common village land to mitigate the cost of administration at village level. Jogmaji. Jogmaji is the chief and mentor of young boys and girls. In every perspective, he guides the young generation. Paranik has a right to play the role of Majhi if Majhi is absent in any case. On the other hand, he advised the Majhi in different issues. Godet plays the role of a messenger during the birth ceremony, marriage ceremony, death ceremony, and any other social event. He circulates the message among the villagers.
Naike plays the role of a community priest. At the Zahir Than, nature-based worship center of village, the religious and sacred place of Santals, he worshipped for the welfare of villagers. Gudam Naike is an associate of Naike, especially outside of the village, he worshipped for the safety of the village. In all above case, female also have parallel role in every social occasions. Without the participation of female, any social event is incomplete. Female members are designated as Majhi Ayo, Jog Majhi Ayo, Paranik Ayo, Godet Ayo, etc. Majhi Mapaji system was backed up economically through the income generated by cultivation and other uses of Man Hasa. For each governing body, members of that particular village, which was probably the best model for sustainable village administration. But unfortunately, the model was partially destroyed through the Patta system, Patta movement, Langol Jar Jomitar slogan of Government of West Bengal during 1970 to 2010. Motive of government was may be taken for good purpose, but of registration of land who is cultivating presently, but in that process so many common lands of village are being recorded to that particular person who was then governing body member of traditional Majhi Mapaji system. As because in traditional system, if any governing member not providing proper service as assigned by Atu Morehor, the provision of seeking him was the ultimate step along with his Man Hasa, common village land, to next governing member after through discussion of village people in Kulhiduru, which was democratic in nature. Now, if income source, common land, if registered to a temporary governing body member, entire system will be collapsed. Exactly what is happening in Santal village of West Bengal right now. Who is responsible for this unexpected situation? There is no gender discrimination in Santal society. Female children also get additional affection and facilities from the society. Here, male and female have different kind of duties, responsibilities, facilities, roles as their sustainable and necessity, as their suitability and necessity. Equality in Santal society is highly appreciated. During the hunting and fishing, they share the meat or fish among all the participants even for the children and dogs. It is also a part of this occasion. Beside, those widows who are unable to participate in this occasion also get the meat or fish as shared to celebrate this community hunting. They always like to remain integrated and united. They always feel oneness among themselves. They always think about whole community. They are attached with each other emotionally and mentally. There is no any dowry system in Santal society as well as among the tribals. Here, bride family get a few symbolic money and 3 saris, namely Enga, Bonga, and Here. Enga means bride's mother, Bonga means sister of bride father, and Here means mother of bride's mother, to pay respect for female, and there is a specific reason for this ritual. The current value of symbolic money is 1 rupees, 3 rupees, 5 rupees, 7 rupees, and 12 rupees. And there are different type of cultural activity in Santal marriage. During the marriage ceremony, according to tribal system, as two villages also get bonded in a strong relationship,
the separation or divorce generally doesn't happen in tribal society. As there is no dowry system in Santal society, bride harassment, torture never seen due to money or dowry items. Besides, Majhi Baba is highly responsible for secure the rights and happiness of bride in her husband's house till her last breath. This is the uniqueness of Santal society as well as tribal society that makes difference from the others in the sense of humanity and human responsibility. Zahir Khan is the religious place of Santals and they follow the path of Sari, that is truth. As their unique characteristic, they have the moral ground and generally never tell a lie in their consciousness. As per the Santal mythology and creation of world, they worship the nature. They worship under the Sarjom Dare, that is sal tree. Their chief god is Singbonga, Marangburu, Zahir Ayo, Modeko Turuiko, etc. One more unique character is they worship their ancestor after death. They call themselves as Bonga Hopon, means son of God. They worship God, the Almighty, who is behind the creation of earth and everything. In each session wise festival throughout the year, they worship the nature and celebrate the Enessereng, that is folk song and folk dance. Baha, Sohrai, Dasai Karam, Sakrat, Makmore are some of the important festivals of Santal. Most of the music and song is based on nature, relationship of nature with human. In terms of traditional judicial matter, they have Majhi Baisi in village level, Pargana Baisi in district level, and Lomahal Baisi in the level of Supreme Court. Majhi at the Majhi Baisi, Pargana at the Pargana Baisi, and Dihri at the Lomahal Baisi are the chief of this judicial process. Matkombuto is being performed for more clarity in the judicial system. Annual meeting of Global Santal has been conducted at Sutantandi, Ayodhyaburu, Purulia, West Bengal since time immemorial. This kind of social structure or traditional social system of tribals make high morality and strong skillful social administration. Social awareness among the Santals as well as tribals are also too high. Due to high morality of the society, antisocial activity is almost zero among the tribals. But nowadays, due to globalization, tribal traditional social system is hampering too much. Social responsibilities of the tribals are going to reduce day by day due to modern lifestyle and individual thinking concept. Tribal people are neglecting their rich culture, custom, folk literature, sustainable knowledge system due to modern education system and earning for money. There is no chance to practice about folk culture or folk knowledge system in formal education system right now. To protect the indigenous culture, we need to re-evaluate the significance of tribal culture, practices, and well circulate among the peoples. We have to find out the scientific values of tribal culture, practice, and rituals. Function of Majhi Pargana system should be recognized by the government in all tribal areas like 5th schedule areas of India mentioned in Indian Constitution. Financial assistance Majhiman may be provided to Majhi Modehor of every tribal village for Majhi Baba and his assistant as they play the vital role to practice and continue the tribal culture and ritual from generation to generation. At first, that money should be divided in two parts. One part should be given to Majhi Baba and another part should be distributed to his assistant equally.
as this is the traditional distribution system of Majiman as per their social contribution. Maji Mapaji Parsad or Act should be enacted by the central or state government, and fund for holistic development of village should be channelized in plain budget for emboldening Sashakt Gaon, Sashakt Bharat, strong village for strong Bharat. In my opinion, village-centric development project should be taken by the government. Government holiday should be declared in tribal social festivals like Baha, Sohrai, Makmore, Karam, etc. and significant day of tribal heroes for raising the social values of Santals. Santals cultural context should be included in school or college textbook or syllabus. Research work should be done in Santals culture and Santals ecocentric lifestyle and their philosophy. Santal has played strong resistance many times against foreign invaders from time to time, despite the difference in military strength and amenities. I am here mentioning only two Santal rebellion. One is in 1773 by Baba Tilka Murmu against the British rulers, started guerrilla war, first of its kind. Agenda was land tax and forceful implementation of British Settlement Act. And second one is Santal Hul. Again on same issues in 1855, Great Santal Hul was appended by Sido Murmu and Kanu Murmu. With 10,000 Santal started initially long march, but it takes shape of armed rebellion against British rulers, which ultimately led to Santal Pargana Tenancy Act came into existence. So, in honor to great warriors of Santal people, government should implement Santal regiment in all form of defense strategies in line with the slogan of reducing the foreign residual except in society. Now, I am discussing about the present situation of Santali language and role of language to protect their culture from external influence. According to the census of India 2001, India has 122 major languages and 1599 other languages. However, figures from other sources may vary, primarily due to difference in definition of the term language and dialect. The 2001 census recorded 30 languages which were spoken by more than a million native speakers and 122 which were spoken by more than 10,000 people. According to the most recent census 2011, after through linguistic scrutiny, edit and rationalization on 19,569 raw linguistic affiliation, the census recognized 1,369 rationalized mother tongue and 1,474 names which were treated as unclassified and relegated to other mother tongue category. Among the 1,369 rationalized mother tongue which are spoken by 10,000 or more speakers, they are further grouped into associate that resulted into total 121 languages. In these 121 languages, 22 are already part of the 8th schedule of the Indian Constitution, and other 99 languages are termed as total of other languages, which is one short of the other language recognized in 2001 census. Santali is the most widely spoken language
of the Munda subfamily of the Austroasiatic language, related to Ho and Mundari, spoken mainly in the Indian state of Assam, Bihar, Jharkhand, Mizoram, Odisha, Tripura, and West Bengal. Santali is one of India's 22nd scheduled language as per the 8th schedule of Indian Constitution and was given status the official encouragement. It is also recognized as the additional official language of the state of Jharkhand and West Bengal. Santali is spoken by around 10 million people in India, Bangladesh, Bhutan, and Nepal, making it the third most spoken Austroasiatic language after the Vietnamese and Khmer. Families with smaller number of speakers are Austroasiatic languages with some 10 million speakers, forming together 3% of the national population. Austroasiatic languages of mainland India are the Khasi and Munda language, including Bhumis and Santali. The language of the Nicobar Island also form part of this language family. With the exception of Khasi and Santali, all Austroasiatic languages on Indian territory are endangered. Until the 19th century, Santali had no written script and all shared knowledge of the community was transmitted orally from generation to generation. European interest in the study of the languages of India led to the first effort at documenting the Santali language. Bengali, Odia, and Roman script were first used to write Santali before 1860 by European anthropologists, folklorists, and missionaries, including A.R. Campbell, Elo Scrapswood, and Theo Boding. Their effort result in Santali dictionaries, version of folktales, and the study of the mythology, syntax, and phonetic structure of the language. Santali was mainly an oral language until the development of Alchiki script by Pandit Raghunath Murmu in 1925. Alchiki, that is Santali script, is alphabetic, sharing none of the syllabic properties of the others Indic script and is now widely used to write Santali in India, Bangladesh, and Nepal. The 92nd Amendment of Constitution of India, officially known as the Constitution Act 2003, amended the 8th schedule to the Constitution so as to include Bodo, Dogri, Moitholi, and Santali language, thereby raise the total number of languages listed in the schedule to 22. Santali was honored in December 2013 when the University Grant Commission of India decided to introduce the language in the national eligibility test to allow lecturer to use the language in college and universities. All this point to the fact that the Indian Constitution has the provision to provide empowering support to all the people of India, and that is why the Indian Constitution is highly empowering in nature, which I spoke on in the very beginning. At present, around 12 universities offered postgraduate studies in Santali language in India. Santali medium education also introduced in West Bengal, although there are weak infrastructure and poor teaching staff. Government should need to develop the infrastructure and should be recruit sufficient skilled teacher. Santali language is now scheduled language of India and should be introduced in maximum school, college, and university as per necessity. Implementation of Santali language in government sector, all state and central, should be introduced as soon as possible. Alchiki script for Santali language should be used in every official purpose. Values of
Indian currency should be written in Santali with Olchiki. UGC NET examination Santali question paper should be set in Olchiki script. Besides, there are many provisions in Indian Constitution of India to protect, safeguard and preserve the indigenous right and scheduled tribe of India. In the present days, these tribes are passing through a very transitional and critical phase due to the impact of globalization. They face various challenges in their everyday life to protect their indigenous identity in 21st century. Given the acute problem of the current climate crisis and consumerist culture across the world, I think the slogan of becoming indigenous is a significant way to save the nature and human civilization through sustainable development and human moralities, which the tribal communities like the Santals. The Constitution of India provides safeguards to maintain such cultural uniqueness of the Santals community, and they should know more about this constitutional right, and that is why more and more translation of the constitutional provision in many indigenous languages are necessary. Jai Hind, thank you and Johar. Johar, Shripad Tuduji. Thanks a lot for this enlightening talk. Particularly, this talk was on the socio-economic, political, and linguistic society, like the development of our Santhali Samudaya. So that was very enlightening. We have gathered and collected a lot of information, a lot of good things, and particularly I was very much interested to know more on the gender discrimination, because in our present society the gender discrimination is a big problem, and I think our Santhali Samudaya would be the right answer, like how to solve this problem of gender discrimination in our present society. And one thing I would like to highlight here, the way you have enlightened us on the issue of antisocial elements and antisocial practices, and Santhali Samudaya was a very good example. Santhali Samudaya was these antisocial activities were almost zero in that samudaya, but now because of the intervention and because of the interference, the modern society and the external, this is the topic of the seminar also, external influences are just influencing our indigenous culture. So two things are in my mind, that we should just strengthen our indigenous culture, and then this indigenous culture only will give solution to our present problems. So in this, I think it was very enlightening. और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न या फिर और आप जानना चाहते हैं संथाली समुदाय के बारे में, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ सकते हैं. जो लोग YouTube पे भी इसको देख रहे हैं वो भी अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं. भाषा की कोई आपके सामने वो हिंड्रेंस नहीं है. आप संथाली भाषा में भी अगर आप पूछना चाहते हैं अपनी बात, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम संथाली समुदाय और हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उन सब तक हम अपनी बात पहुंचे. आज जो मेरा अपना पर्सनल ये अनुभव है कि हम उन सब चीजों को हमने हमारी पिछले कुछ सालों में हमने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं जो कि आज के हमारे समाज में, आज की हमारी समस्याओं में एक बहुत बड़ा समाधान दे सकती हैं. ये बहुत ही मतलब मूल्यवान और बहुत ही कारगर चीजें हैं. अगर हम उनको पूरा सम्मान दें और उनको पूरा जितना उनका हक है, मतलब वो हमारे समुदाय के साथ 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 चले, तो जिस तरीके से आज हमने बहुत सारी चीजें जानी और जो रिबेलियन के बारे में भी जाना, और वो सारी चीजें नहीं थी आज तक, हमने उनको नहीं अच्छे तरीके से जाना था. तो ऐसे श्रीपद टुडू जैसे हमारे जितने एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनकी मदद से हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे. और आप सब लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि फील फ्री टू राइट योर queries, or you may ask also your queries here. Our experts would be more than happy to answer your queries. So with this request, now I'm moving towards our next speaker. The next speaker is Shri Sashikant, Shri Parsal Kishkuji
Shri Parshal Kushku is Assistant Professor of Physics from April 2017 at Triveni Devi Bhalotia College, Raniganj, West Bengal, which is under Kaji Nazrul University in West Bengal. He had done his masters from Banaras Hindu University, which is known as Kashi Hindu Vishwavidyalaya. He had qualified joint CSIR UGC NET in 2014. He's quite young, and he was partially engaged in translation of physics book into Santhali language. That's very fascinating thing for me, that he is helping in this translation, and I think it is required. It is highlighted by our honorable Prime Minister also, the translation thing and the treasure hidden in our regional languages. So he's helping in this regard. Translation of physics book of physics in Santhali language from class 11 under the West Bengal Council of Higher Education in 2019, from 2019. So it is very praiseworthy. Now we all are waiting to listen to Shri Parsal Kishkuji. Now this virtual platform is all yours, Shri Kishku. Yeah, thank you, organizing committee, for conducting this program. And I would like to share my PPT. Uh, is it visible? Yes, yes. Yes, now it's visible. Okay, okay. Full screen. Yeah. Today, our discussion topic is understanding various modes of tribal development, protecting their indigenous culture from external influence. So there is a few uh, keywords that are tribal development, indigenous culture, and external influence. So now I am going to focus my topic on it. Before starts this program, myself, Parsal Kisku, Assistant Professor of Physics, currently posted at Triveni Devi Bhalotia College, and I am going to share my PPT, and now I am going to discuss my topic, which is the importance of inclusion of tribal culture in educational system and necessity of tribal medium education. Education is the most important part of the development of any society or any community. Still now, many of tribal people cannot be a part of the mainstream of our modern society. Many of indigenous people don't know English, don't know Hindi, or other official languages of their state or country. They are comfortable and frequent in their own mother tongue. So, whenever any indigenous people want to avail education, then they have to face any foreign languages, and which is very difficult for every ordinary tribal people. They realize that to survive in modern society, they must adopt modern languages and cultures. This is the beginning of the retrogression of tribal culture and ordering. On the other hand, the people of mainstream society behaves or deals unusually or improper way for their distinct physical complexion, color, caste, culture, and for their different accent of speaking or wrong pronunciation. That is one of the greatest reasons for that tribal peoples are unwilling to talk in their own mother tongue in shared public places in mainstream society. And uh, in many cases, it has been observed that
indigenous people want to hide their identity from mainstream society. That's why even after 75 years of independence, we can see indigenous people, families, those who have jobs or live in a better or live in a civilized family, don't teach their children about their mother tongue, or they are not interested in teaching them their own mother tongue. This is how one of the key elements of indigenous culture, language, is about to extinct. There are two possible ways to deal or solve these situations. Firstly, developing or rising consciousness about indigenous tribes in the mainstream society, so they can adopt that indigenous people are also Indian and they are also common people as any other human being, and their culture and languages are different only. And secondly, granting rights or taking necessary steps so that indigenous people can study or read or be taught in their own native languages. There should also introduce indigenous culture or languages in Indian educational system as a proper as a paper or course for the upliftment of development of indigenous people. The inclusion of indigenous culture and language should be mandatory. If by government's effort these policies are introduced to Indian educational system, then the indigenous people can easily cope up with the modern society, also holding on to their own culture. Only by using the methods of education, the indigenous uh, tribes can understand how important their culture is and why they should hold it in modern. Culture generally means language, society in the certain environment, and it may be in a village or household along with farming, animal husbandry all together. If the government specially tries their best and takes necessary actions, and they can really help keeping the indigenous culture intact in this sense. Government sometimes destroying or harming their cultural identity while trying to help them. For example, in Indira Awas Yojana or Pradhan Mantri Awas Yojana, the government actually trying to make concrete house for the indigenous people tends to lead to the destruction of their original household, the indigenous pictures, figures, sacred gods are on the brink of extinction. These embossed murals or pictures show us the culture and lifestyle of the indigenous people. During many festivals, they draw various sacred scriptures on their walls or in front of their homes, expressing their religious beliefs and rituals. Just like this, uh, since British period, to make the British understand their uh, language and culture, they had to improvise a lot in presenting their culture, like songs and dances, resulting in several destruction of culture in the indigenous community. These damages can still be seen even today. So whenever the government
decides to take control of a project or contract, they need to aware of the possibility that if that project will somehow damage the indigenous culture or not, and they need to make sure that these projects can reach to the very grassroots of these cultures. The government or the nations tries its best for women empowerment projects like Beti Bachao, Beti Padhao. If just like that, the government tries to spread awareness about indigenous people and their uh, culture using slogans, advertisements, and projects, then the indigenous communities can truly grow hand in hand with modern society. That is a significant lack of government implementation for indigenous tribes. The government should ensure that these projects or scholarships get to the roots of indigenous communities. In many cases, it has been seen that these projects are done just for the name, and they are sometimes not getting uh, fulfilled. Being an indigenous resident of West Bengal, I can surely say that in comparison to the other states, West Bengal approach and standards in education system in tribal languages are remarkable. Also, it should be mentioned that there are enough Santali known teachers to teach Santali in schools and lack of subject teacher in Santali medium schools. It should be mentioned that the Santali is one of the indigenous languages in West Bengal. There are several teachers that are not familiar with, they don't have the required uh, proficiency in Santali language, such as unable to speak in Santali and even unable to read Olchiki script used for writing Santali languages. So you can see that the indigenous uh, projects in case school or educational system, the main element or concern here I talked about a teacher is not able to read even Santali books. So there are lots of errors such as typographical error or missing symbols, pictures, equation, proof of theorem without giving any diagram, etc. in the Santali medium textbook written in Olchiki, which have been published by West Bengal government. It is very pathetic to say that for the last 6 years, the intermediate students are suffering. No correction or printing has been done yet. This is how a government system is going on. If only the government or nation or state takes strict measures against these kind of problems, then we as an indigenous community will be able to thrive in the modern era, is what I firmly believe. And the time is limited and topic is profound and very vast. So during this short time, I presented this lecture or this topic, and now I am again very thankful to Unnayan Bharat Abhiyan, IIT Delhi, NIT Durgapur, and I am thankful to my own institute, which is TDB College, Raniganj government, and the picture mm, courtesy which are taken from Google. And again, thank you everyone for your patience, and you feel free to ask any kind of question or discussion about my topic which I have discussed. Yeah, thank you very much, Kishkuji, for
again, very enlightening thing, enlightening issues, particularly the issue of Awas Yojana and protecting the indigenous murals. So that particular thing was very important thing for me, because in this, like when we are in a different society, when we are living in a city, so we don't think on these small petty issues. Though you were saying that the picture courtesy was Google or something internet, but I think this is the mandate of Unnat Bharat Abhiyan. This is like to reach the common man, to reach the last person of the society, to reach the villages. So I think our researchers, our students, and our like experts will reach to the society and will transact in these villages, and then get the real thing of the real indigenous culture, art, languages. These things should be understood from close quarters. And I think when these things are understood from close quarters closely, then only we can think on these things and we can frame the policies accordingly. Because Unnat Bharat Abhiyan also thinks in the same line. This is the mandate of Unnat Bharat Abhiyan, to implement the things, the policies in villages, and for the development of villages we all have been working. So that's a very good thing you have raised, particularly the Awas Yojana and the problem of maintaining the murals. And I think there were some questions, and people wanted to ask. So still, if someone is interested in asking the question, so he or she may write the question, or we may entertain the question even towards the end of the seminar also. But if you are interested to ask, you may ask right now. So it's a process, so we will be doing it. But thank you very much, Kishkuji, for this talk. Now we are moving towards Shri Shashikant Murmuji. Shashikant Murmuji is currently Assistant Professor, Head of the Department of Political Science of Mahatma Gandhi College, Sidhu Kanu Birsa University, Lalpur, Purulia, West Bengal. He is also invited faculty member of Murshidabad University and Lalgarh Government General Degree College. His area of study is political crisis in Jungle Mahal. Yeah, Jungle Mahal area and the Adivasis. He has total teaching experience of 28 years. The most experienced experts or the speakers for this webinar: 21 years in HS school and 7 years in college. He is an active member various social organization: Bharat Jagat Majhi Paragna Mahal, Prokti Bachao Adivasi Bachao Manch, Fight for Save Adivasi and Nature Scheduled Tribe Welfare Association, Majhi Paragana Juan Mahal. He has got 6 publications, 2 short stories. He writes stories also. That's very good. So we will be happy to listen these indigenous stories, the stories about our Janajati Samudaya, scripted 2 short films also, and organized workshops and webinar. Very interesting, sir. Today he will discuss on the topic impact of development projects on nature dependent tribal life, livelihood and culture, problems and solutions. So we are very much looking towards this. Now I request Shri Shashikant Murmuji to give this talk. Shri Shashikant Murmuji. Hello. Thank you, Dr. Sri Krishna Roy ji. Johar and good morning, everyone. First of all, I would like to give my heartiest thanks to the entire member of Unnat Bharat Abhiyan. My special honor to respected co-speaker, and very, very thanks to all the audience who have listened to the program today through the digital media. The initiative undertaken by the Minister of Education, Government of India, entitled Unnat Bharat Abhiyan, the main goal of which is Sabko Lekar Sabka Vikas. It is very appreciative thing that the Delhi IIT, in the form of National Coordinating Institute, has been trying it been for the successful
implementation in this mission. I would like to express my heartiest thanks to all the connected members with this mission. I fully agree with the view that for the development and upliftment of the tribal people, it is essential to study and comprehend their society and culture. By virtue of being a person belonging to this community, I also agree that it is very essential to make the implementation of the various modes of the tribal developmental projects. At the same time, it is also essential to protect indigenous culture from external influence. Sir, I would like to share my screen, PPT. Just wait for 1 minute. Yes, sir. Is it visible, sir? Hello? No, not yet. Not yet. बॉटम में एक शेयर का बटन है जी. अभी 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 हो सर. Now? Yes, Is it yeah. clear? Yes, yes. Now please make it full screen. हाँ, आप इसको Yes. full screen करिए. अब आपकी स्क्रीन हम या एकदम सही है. Oh, thank you, sir. My topic in today's webinar is impact of developmental projects on nature-dependent tribal life, livelihood, and culture, problems and solution. यानी कि आज की जो मेरा टॉपिक है वो है विकास की योजना और आदिवासियों का जीवन जीविका एवं संस्कृति के ऊपर इनका प्रभाव, समस्याएं और समाधान. Before discussing on this, it is indispensable to know who are tribes and what is the specialty of their culture. As per the Article 342 of the Indian Constitution, those communities and races included in the schedule by the President of India are scheduled tribe. The term tribe is an administrative and also constitutional term. Actually, tribal people are Adivasis. Because the criteria needed to be included in schedule reveal the true nature of the tribal people. Second thing is, what is the specialty of the tribal culture? The second criteria among the criteria for inclusion in the schedule is distinct culture. It means that the culture of the tribal people is different and distinct. They have been following their culture for 1,000 years traditionally. If you look into the matter deeply, you will realize how old, how distinct, and how rich their culture is. Their way of life, habit of eating and drinking, dressing, songs and music, social rule, structure, and tradition are absolutely different. The culture of any community is determined by their manner, social norms, way of their worship, etc. All of you know that tribal society relies on equality. In the thought of communal unity, this is the specialty of their culture. Songs and dances, eating and drinking, hunting, everything is done communally. There is no gender discrimination. This is the very culture and society of the tribal people. Now we will cast a glance into the deep-rooted relationship between tribal people
and jungle and how they depend on the jungle. आदिवासी एवं जंगल की जो रिश्ता है वो कितना गहरा है और किस तरह जंगल एवं आदिवासी दोनों ही परस्पर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम चर्चा करने का थोड़ा कोशिश कर रहा है. All of you know that awakening and flourishing of the tribal society took place into the distant and dark jungle of nature by constructing a village in the jungle. They started living together. यानी कि प्रकृति की घने जंगलों में, जंगल की अंधेरों में आदिवासी समाजों का उन्मेष और विकास हुए थे. जंगल में गांव बसा के सब मिलकर एक साथ रहते हैं. आदिवासी लोग जंगल को अपने माँ मानते हैं. आदिवासी जमीन से जुड़े रहते हैं. प्रकृति के पूजक है आदिवासी. जंगल के रखवाला है आदिवासी. पेड़ पौधा पत्थर पहाड़ नदियों को इन लोग अपना देवता मानते हैं. जाहिर थान में मारांग बुरु जाहिर आयु का पूजा होता है. गरामथांग में सिंह बोंगा का उपासना होता है. यानी कि ये जंगल में जो आदिवासी लोग जो ज़्यादातर ही रहते हैं, तो जंगल को वो प्रकृति को वो अपने आवश्यक रूप से मानते हैं, देवता मानते हैं. केवल यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जंगल की जो परिस्थितियां है उनसे आदिवासी लोग इतना मिलजुल के रहता है कि उनको बाहरी दुनिया का कोई भी वस्तु का आवश्यकता भी नहीं होता है. जैसे कि उनका जीवन धारण करने का जो उपकरण होता है वो सब कुछ जंगल से ही मिलता है उनको. साल के पत्ते, केंदू के पत्ते, शहद, लकड़ियाँ, टोकरी, झाड़ू, चटाई, कूला, सब कुछ वो जीवन धारण के लिए जो चाहिए वो जंगल से ही उनको मिलता है. तो अगर हम गैर से देखेंगे तो देख पाएंगे कि जंगल से आदिवासियों का बहुत ज्यादा, बहुत गहरा रिश्ता है. अब देखेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट एंड जो प्लानिंग लिया जाता है उनका प्रभाव कैसा है आदिवासी लोगों का ऊपर, उनका डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग और स्कीम किया गया है, वो भी थोड़ा जानने का ज़रूरत है. तो देखेंगे बहुत सारे ऐसा प्लानिंग है, स्कीम भी है जो सरकार की तरफ से लिया गया है. And we can say it is doubtless that the government has taken some schemes and plans for the development of the tribal people. These plans are very essential for their development. Such as अब देखिए यहाँ 15 स्कीमों का, प्लानों का नाम लिखा गया है. वो ये सब आदिवासियों का डेवलपमेंट के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार की ओर से कार्यकरी कर दिया गया है. तो ये जितना प्रोजेक्ट है, ये जितना प्लानिंग है, जितना स्कीम्स है, आप देखिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारे हैं. स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम्स. ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है 275 का 1 का जो ग्रांट्स अंडर प्रोविजन टू आर्टिकल 275(1) में देखिए यहाँ कोई राज्य सरकार अगर कोई प्लानिंग बनाएगा और सेंट्रल के पास भेजे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग है वो आवश्यक रूप से देना पड़ता है ट्राइबल का डेवलपमेंट के लिए.
उनके साथ साथ आप देखिए ट्राइबल का डेवलपमेंट और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे लॉज भी है, बहुत सारे कानून भी लागू किया गया है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब एंड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कंजर्वेशन राइट्स एक्ट, जिसको हम FRA 2006 कहते हैं, द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट जो है 2013 में। ऐसे बहुत सारे आइन, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे एक्ट भी कार्यकरी किया गया है, जिससे आदिवासियों का भलाई हो, उनका समृद्धि हो, उनको अपलिफ्टमेंट किया जा सके। And there is no doubt regarding the fact that these plans are and schemes are very essential and helpful for their socio-economical, educational and cultural developmental and upliftment of the tribal people। आदिवासी को विकास के लिए, आदिवासी के हित के लिए ये सब जितना प्लानिंग है, जितना प्रोजेक्ट है, इसका जरूरी, निश्चित रूप से ये जरूरी है, इसका प्रशंसा करना भी चाहिए। बट सर, whenever a discussion is made on developmental projects, a strange feeling of fear come creeping in the mind of the tribal people, because all the factories, dams, roads, mines, tourism have been formed so far in the name of development have been made on the land of the tribal people. You will not be able to present such an example where mine, hydro project, steel iron factory or dam has been constructed without snatching the land of tribal people or without displacing them। यानी कि अगर हम देखेंगे, जब भी कोई प्रोजेक्ट लिया गया है, यहाँ थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, तो जितना सारे डैम बनाए गए, माइंस हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हुए हैं, तो इनके लिए जो जमीन लिए गए हैं, तो जमीन किसका है? वो जमीन आदिवासियों का है। तो एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट को साकार किया गया लेकिन आदिवासियों का जमीन नहीं लिया गया है, ऐसा कोई उदाहरण हम नहीं दे सकते। In 1951, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, had undertaken several plans and projects for development and urbanization. At the same time, he had initiated 5-year plan for implementation of these plans and projects in reality. A large number of dams like Panchet, Hirakud, Bhakranagal, Maithon, Mukutmanipur, Chandil have been built on several rivers such Damodar, Narmada. A number of mines and factories have been constructed in such places like Bhilai, Raurkela, Durgapur, etc. In the inauguration ceremony of establishing the foundation stone of the Hirakund Dam, Nehruji said, if you are to suffer, you should suffer in the interest of the country. While speaking to the villagers who were displaced by the above mentioned dam, he also said, dam are the temple of modern India. मंदिर तो बना लिया साहब, लेकिन किसके जमीन पर? अगर हम देखेंगे तो इतने सारे जो डैम हुआ है, जितना सारे प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो हम देखेंगे थोड़ा सा अगर इसको हम जो है यहाँ देखेंगे तो देख पाएंगे, जो एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट 2018 का जो रिपोर्ट है, उनमें से हम देख पाएंगे 1.6 लाख हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट लैंड है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गया। 2500 टाइप्स ऑफ प्लांट destroyed, 220 types
of animals have been abolished. 3.50 crore people are migrated from their land. एवं ये 3.50 करोड़ पीपल में से अगर हम देखेंगे तो 2.60 करोड़ आदिवासी और ट्राइब लोग था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पांचेत डैम जो है, सरदार सरोवर, महाराष्ट्र का जो जबलमल डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का जो नियमगिरी हिल्स है, इसमें बहुत सारे डाटा दिया हुआ है जहाँ लिखा गया है कि दिखाया गया है कि कितना सारे जमीन आदिवासी से छीने गए हैं। तो डेवलपमेंट की नाम से कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन से विस्थापित होने का एक डर, अजीब सा डर एक आदिवासी के अंदर पैदा होते हैं। अब देखिए वेरी रिसेंटली 2 projects have been undertaken on the part of the government of West Bengal. These are Devcha Pachami coal mine block and another is Turga Pump storage project. ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे जे देवचा पाचामी में जो कोल ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। तो यहाँ 9.7 जो स्क्वायर किलोमीटर इलाका इनको लिया गया है और उसके साथ साथ 42 विलेजर्स। और ये दूसरा वाला है जो टूरगा पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ 209 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो वनभूमि है उसको ले जा रहा है। 12 विलेज एंड 1700 से भी ज्यादा विलेजर्स डिस्प्लेसमेंट होगा। 3.50 लाख प्लांट और आदिवासी का जो है, अभी श्रीपति जी ने कहा है, जो सूतन टांडी है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, जहां आदिवासियों का आचार विचार होता है, उनका रीति रिवाज का अगर संशोधन करना पड़ता है तो यहाँ सूतन टांडी में होता है। उसके साथ साथ अयोध्या में है मरांग बुरु पहाड़, जिसको हम देवता मानता है, सबसे बड़ा देवता, वो भी यहाँ का है। तो अगर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा आदिवासी के ऊपर। तो इसका इफेक्ट जो हो सकता है माइग्रेशन होने से, तो इससे पहले मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हम बता रहे हैं, ये शेयर करना चाहते हैं। मेरा टॉपिक है पीएचडी का जो थीसिस पेपर, उसको सर्वे के लिए मैंने इन कोर्स ऑफ माय सर्वे ऑन द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी थीसिस आई विजिटेड लालगढ़। There I asked a person who went to jail because of his involvement in the Maoist activities, why did you take weapon in your hand? There are so many means of establishing your right. मैंने जब उनको पूछा जे आपने क्यों ऐसा काम क्यों किया, जब आपका अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इतना सारे आइन है, अदालत भी है, तो ऐसा काम करने का जरूरत क्या था? तो उन्होंने जवाब दिया, ये घने जंगल में हमारा गांव बसा है, ना चास आबादी ठीक से होता है, ना सरकार का सहायता मिलता है, अस्पताल, सड़क, बिजली, स्कूल कुछ नहीं था, पीने के पानी के लिए हम तरस जाते, 7 से 8 क्रोस जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, फिर भी हम खुश था। लेकिन जब ये इलाका स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह के निश्चित किया गए और फैक्ट्री बनाने का कोशिश किया गए, हमारा जल जंगल जमीन को छीनने का प्रयास किया गए, हम सबको हमारी पुरखों की जमीन से, भूमि से विस्थापित करने का षड्यंत्र रचा गया, तो हम बोले तो किसको बोले, हम करे तो क्या करे? आपने हमारा जल जंगल जमीन छीना, उजाड़ दिया घर परिवार, आप पूछते हो साहब क्यों पकड़े हैं हम हथियार? वो कहने लगे, साहेब जल जंगल जमीन के लिए ही तो बाबा तिलका माझी
और वीर सिद्धू कानू ने हथियार पकड़े थे। I had no answer for this because the relationship between the tribal people and jungle is a reality very deep rooted. Without jungle, their life is insufficient. Now, we can see what is the effect of migration and impact of migration on the livelihood and culture of the tribal people. ये विस्थापित होने से, जल जंगल जमीन छीन जाने से ये आदिवासी जो ट्राइबल पीपल होता है उनका क्या क्या दिक्कत आ सकता है, उनका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये थोड़ा देखना चाहिए, हम लोग को जानना चाहिए। पहला जो इफेक्ट हो सकता है वो है एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का जो विलुप्ति की, भाषा का संकट जो है, लैंग्वेज का क्राइसिस, वो हो सकता है। कैसे? देखिए, आदिवासी जो समुदाय है, वो आदिवासी समुदाय बंगाल में अभी 40 ग्रुप्स है, ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिव इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ जो संताली, सादरी, मुंडारी जो लैंग्वेज है, अगर जल जंगल जमीन से वो विस्थापित हो जाएगा तो उनका वो जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज की सहायता में वो पुरखों की जो ट्रेडिशन है, जो जो हिस्ट्री है, ये सब जो कस्टम्स है, जो वो बोलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगी और ये भाषा का संकट, भाषा का विलुप्ति होने का संभावना हो जाता है अगर जल जंगल जमीन से आदिवासी लोग विस्थापित हो जाते या उनको माइग्रेट किया जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सिटाडेल एंड वे ऑफ वर्शिप क्राइसिस, यानी कि जो धर्म स्थान है, उनका जो पूजा पद्धति है, उनमें भी संकट आ सकता है। कैसे? देखिए, वो जंगल में रहते, उनका जो देवता है वो पेड़ पौधा है, पत्थर है, जाहिर थान है, माझी थान है, गरम थान है। तो ये जो सब थान है, जहाँ धर्म स्थान अगर माइग्रेट हो जाएगा, वो विस्थापित हो जाएगा, जंगल से उनको बाहरी दुनिया में भेज दिया गया है, तो ये जाहिर स्थान, माझी स्थान, गरम थान का भी वो उसका ध्वंस हो जाएगा, उसका विलुप्ति हो जाएगा। तो कहाँ पूजे करेगा? वो जो मड़े को तुरु को श्रीपति जी ने कहा है, मड़े को तुरु को, वो है पूर्वज, वो पूर्वज को कहाँ कहाँ पूजेगा? उसका जमीन तो छीन जाते हैं, उसका तीर्थ स्थान, उसका धर्म स्थान छीन जाते हैं। तो ये जल जंगल जमीन, ये इफेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरे वाला है जो उनका जो लाइफ एंड लाइवलीहुड, इनका क्राइसिस होता सकता है। हमने पहले बोला है कि जंगल में रहकर आदिवासी ने उनका जो है सब कुछ जंगल में ही मिलता है। उनको लकड़ियाँ, पत्ते, साल के पत्ते, केंदू पत्ते, टोकरी, झाड़ू, चटाई, शायद जो वो जंगल से इकट्ठा करते हैं अपनी जीवन यापन करने के लिए, अगर वो चला जाएगा विकास के लिए, विकास के नाम से, प्रोजेक्ट के नाम से, तो वो कैसे अपनी जीवन बिताएगा? वो पूरे क्या कहते हैं, नमल खटने जाएगा, किसी शहर की अंधेरे गली में पड़े रहेगा, वो कैसे उसका लाइफ में कोई बहुत सारी दिक्कत पैदा हो जाएगा। चौथा में अगर हम देखेंगे, एबोलिशमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, यानी कि आदिवासियों का जो जो सोशल सिस्टम होता है वो बहुत अलग किस्म का होता है। उनका माझी परगना सिस्टम है जो समाज व्यवस्था को जुड़े रखता है। उनका स्वतंत्र आईन विधि भी है जो लॉ बीर बाईसी है। तो ये जो सुल्तान टांडी है, आतू सोलवाना है, ये सब उनका सोशल स्ट्रक्चर है, सिस्टम के अंदर है, ये सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। और पांचवा ये हम देख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड कल्चर। आदिवासी एक साथ रहता है, एक साथ नाचते हैं, गाते हैं, पूछते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। उनका उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कस्टम्स है, वो वंश परंपरा से आ रहा है। तो अगर जल जंगल जमीन की अधिकार उनको छीन लिया जाएगा तो
वो कैसे उनका वो जो फेस्टिवल है, बाहा सराय, सारहुल, उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तुंदा टमाक, उनका जो वो जो उम, जन्म के समय, विवाह के समय जो रीति रिवाज है, वो रिचुअल है, वो कैसे कैसे पालन करेगा, कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे संरक्षण करेगा। तो यही एक इफेक्ट हो सकता है जल जंगल जमीन से छीनने से। और लास्ट हम बताएंगे 6 नंबर में, वो है लॉस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। ये इसको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो देखिए, ये जो बड़े बड़े डैम हो रहा है या माइंस हो रहा है या थर्मल प्रोजेक्ट भी हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? जंगल पे हो रहा है, ज्यादातर जंगल में ही हो रहा है। जंगल में कौन रहता है? आदिवासी लोग रहता है। अगर उनको विस्थापित किया जाते हैं, तो उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो लैंड के साथ, वो भूमि के साथ, वो जमी के साथ, वो जमीन के साथ, वो विनष्ट हो जाएगा। एक एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ अयोध्या हिल्स, अयोध्या बुरु हम कहते हैं। तो वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, 92 विलेज वहाँ है। तो उन ट्राइबल में से जो वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप होता है, जो बीर हड़, वो अब विलुप्त हो जा रहा है। तो बीर हड़ पश्चिम बंगाल में अयोध्या बुरु में रहता है। तो उन लोगों को क्या किया सरकार के द्वारा, वो अयोध्या पहाड़ की नीचे जो बागमुंडी इलाका है, वहाँ अच्छे सुंदर सुंदर मकान बना दिएगा, उनको रहने का जगह दिया, उनको दुकान वुकान बना दिया। चलो तुम लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो, आराम से रहो। जंगल में क्यों रहते हो? वहाँ पेड़ पौधों में जो घर है तुम्हारा, वो तो टूटा फूटा है, आओ यहाँ रहो। तो उन लोग पहले गया, वहाँ जाकर देखा, बड़ी अच्छे घर है वहाँ, सरकार ने अच्छा योजना बना लिया। तो 1-2 दिन रहने के बाद सब फिर लौट गए वो जंगल में, जहाँ उनका वो टूटे फूटे घर है, पेड़ पौधे पत्ते से बना लिया, वहाँ चला गए। तो सरकार की जो आधिकारिक है, प्रशासन विभाग की जो लोग है, वो गए वहाँ और जाकर पूछा, अरे भाई तुम लोग को इतना इतना अच्छा मकान बना दिया, तो ये क्यों रह रहे हो यहाँ? तो आपका जमीन अपने नाम पे भी तो नहीं है, पट्टा भी आपको नहीं मिला, चलो वहाँ। तो उन लोगों ने बोला, साहेब वो नीचे जाकर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े मकान में रहकर क्या करेंगे? यहाँ जंगल में पुरखों का निशानी है, ये मिट्टी में हमारा पुरखों ने जन्म लिया, पाले बड़े हुए, और उनका समाधि भी यहाँ है। ये जमीन से हम जुड़े हुए हैं, हमको यहाँ से मत ले जाओ, हम यहाँ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट, इसको अगर ये विकास के नाम पे कल कारखाना डैम बना के अगर इनको विस्थापित किया जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आखिर में ये पॉइंट में मैं कहूंगा, एवरीथिंग इज लॉस्ट इफ जल जंगल जमीन इज लॉस्ट। अब देखिए क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा, रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पुरुलिया में वो जो अयोध्या पहाड़ का, हम बार बार जिक्र करेंगे अयोध्या पहाड़ का, हम वहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं सब मिलकर, वहाँ सेव नेचर एंड सेव आदिवासी बहुत काम चल रहा है, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ घने जंगल है। तो जंगल में हम देख रहे हैं कि आदिवासी लोग जंगल के अंदर है, उनका ना बिजली है ना पानी ठीक ठाक से है, लेकिन वहाँ रिसोर्ट बहुत बना दिया, बहुत बड़ा बड़ा रिसोर्ट है, होटल्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुशलपुर एक नामचीन एक होटल है, 5 स्टार होटल का जो फैसिलिटी है, यहाँ मिलता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ संस्कृति के नाम पर ऐसा बंजारा नाइट होता है, जो आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है। और आदिवासी लोग क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के बाद क्या हुआ, ये आदिवासी लोग देखिए यहाँ वो होटलों में, वो रिसोर्टों में काम कर रहा है, 200 रुपया डेली उनका महीना है। और क्या कर रहे हैं, ये जो कल्चर का कैसे जल जंगल जमीन जाने से कल्चर का क्या अवक्षय होता है। देखिए यहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, और कुछ पैसा देकर आदिवासी जो है, आदिवासी को नाचा रहा है पैसा देकर। यही क्या डेवलपमेंट है जी। इसीलिए बहुत सारी जगह में हम कहेंगे यहाँ
वेस्ट बंगाल का बीरभूम जो है, देवचा पाचामी और अयोध्या जो है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है आदिवासियों का। तो इतना कुछ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है? ऐसा हम नहीं कह सकते। प्रोजेक्ट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, और साथ साथ आदिवासियों का जो जीवन जीविका है, जो संस्कृति है, उनको भी बचाना है, संरक्षण करना है। तो समाधान क्या है? नाउ इट इज ए $1 million क्वेश्चंस। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स? What type of projects and plan will help tribal people flourish and develop at the same time their indigenous cultures can be protected from external influence? क्या ऐसा समाधान हो सकता है? My suggestion as a person of this community as well as an active member of Save Nature, Save आदिवासी मूवमेंट, मेरे विचार से प्रोजेक्ट तो लेना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ आदिवासियों का जीवन जीविका और संस्कृति को संरक्षण करने के लिए कुछ विषय में ज़्यादा ध्यान देना का जरूरत भी है। जैसे कि पहला, ये इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। इंडिया में बहुत आइन बना हुआ है, बहुत कानून है, जो कानून आदिवासी को सुरक्षित कर सकता है, उनका भाषा, उनका संस्कृति, उनको जीवन को बचा सकता है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिस राइट में पूरी विस्तार से लिखा हुआ है कैसे ग्राम सभा बनेगा, फॉरेस्ट राइट जो कमिटी है उनका काम क्या है, आदिवासी को कैसे विकास की ओर ले जा सकेंगे, ये सब कुछ इस आइन में लिखा हुआ है। लेकिन बड़ी दुख की बात है सर जी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अभी भी पश्चिम बंगाल का किसी भी कोने में, किसी भी जंगली क्षेत्रों में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट कमेटी तो दूर की बात है। दूसरा, लैंड फॉर लैंड सेक, यानी कि आज तक इतना डैम प्रोजेक्ट बना है, डैम, कारखाना, खनि इत्यादि, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ का नियम है, क्या करते हैं, उसको जमीन दो और बदले में लो ये रुपया लो, यानी कि उनको कुछ पैसा देकर वो जमीन ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट जरूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन जिस जमीन को ले जा रहे हैं आदिवासियों से, उस जमीन उसी तरह उनको जमीन भी देना चाहिए, जमीन के बदले में जमीन देना चाहिए। अगर ये सिस्टम ठीक ठाक रहेगा तो आदिवासियों का जल जंगल जमीन का जो समस्या है, इनका थोड़ा तो समाधान हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में बनाया गया है, लेकिन इसका प्रयोग यथार्थ रूप से कहीं भी नहीं होता है। तो लैंड फॉर लैंड से, जमीन लेते हो तो जमीन देना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो बोर्ड, ये आदिवासियों का भाषा के विकास के लिए, संस्कृति के संरक्षण करने के लिए ट्राइबल लैंग्वेज का स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, उनको बोर्ड देना चाहिए, तब उनका भाषा का विकास होगा, संस्कृति का संरक्षण कर सकेगा। और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मस्ट बी फॉलोड, ये तो पंचायत का रूल ही है। ये जितना सारे लोकल ग्रास रूट लेवल में जितना सारी प्रोजेक्ट लिए जाएगा, तो उनमें जो प्लानिंग होता है, तो उनमें जनगण का अंशग्रहण सुनिश्चित करना चाहिए। ये तो पंचायत का नियम ही है, इनको सही मात्रा में लागू करना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स, आदिवासियों का जो सोशल कस्टम्स है, माझी परगना जो व्यवस्था है, इनको आइनगत रूप से स्वीकृति देना चाहिए। आर्टिकल 13 का जो
तीसरा पॉइंट है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है, तो ये जो ट्रेडिशन जो पहले से चल रहा है संविधान लागू होने से पहले, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। और मेक मास अवेयरनेस कैंपेनिंग, तो देखिए सरकार की जो सुविधाएं है, बहुत सारी सुविधाएं हमने पहले बोला है, तो इन सुविधाओं को आदिवासी तक पहुंचाने के लिए उनको तो बोलना पड़ेगा, उनका हक क्या है वो जानते ही नहीं। इतना सारे सुविधाएं है सरकार की ओर से, तो लोकल लेवल का जो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग, उनकी पास जाते हैं नहीं। ये जो इंडिया का पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत अलग किस्म का है। तो यहाँ किसी भी ज्यादातर जितना प्रोजेक्ट है, जितना सुविधा है आदिवासियों के लिए, वो आदिवासी लोग ही नहीं जानते। तो उनको अवेयरनेस करने का आवश्यकता है। और आखिर में हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम स्वराज एंड सेल्फ रूल, ग्राम सभा एफआरसी। ग्राम स्वराज, ये बात तो गांधी जी ने बोला था, जो ग्राम को सशस्त्रीकरण करना पड़ेगा, ग्राम को स्वयं संपूर्ण करना पड़ेगा। अगर ग्राम स्वयं संपूर्ण होगा, ग्राम स्वराज स्थापित हो सकता है, तब ही भारत का विकास हो सकता है। तो ये ग्राम स्वराज, ग्राम को शिक्षित करना, उनको स्वयं संपूर्ण करने का आवश्यकता है। और आखिर में मैं कहूँगा आदिवासी बहुत मासूम है, लाचार है, गरीब भी है, फिर भी वो खुश है, क्योंकि आदिवासी केवल अपने समुदाय के लोगों को लेकर जंगलों में, पहाड़ों में अपना परंपरा, अपना कस्टम्स, अपना रीति रिवाज के साथ रहना चाहते हैं। अगर इनका विकास करना है तो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें बनाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको स्वावलंबी करना चाहिए। लेकिन उनको अपने पूर्वजों की जमीन से विस्थापित करना नहीं चाहिए। आदिवासी जल, जंगल, जमीन का अधिकार को नहीं छीनना है। अगर उनसे जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीन लिया जाए तो आदिवासी जंगल के बिना जीवित नहीं रह सकता। यही प्रार्थना के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। सबको फुल जोहार। जोहार मुर्मू जी। जोहार जोहार। ये हाँ, आपने अपनी बात बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ पे रखी है। एंड डेफिनेटली द डिस्कोर्स ऑफ जल, जंगल, जमीन and the development, these two things are both important, but the way you have started the process, and in the process, the one thing which just interested me, that was the self dependent and the self sufficient approach of jungle, jameen and Adivasi community. And somewhere when we were in corona time, this thing was felt and this thing was understood by all, not all, in country all over the world. ये सेल्फ सफिशिएंट जो स्वावलंबन की जो एक हमारे सामने स्ट्रक्चर है, आदिवासी स्ट्रक्चर है, कि सारी चीजें हमें वहीं पे उपलब्ध हो जाती हैं, इस चीज का कोरोना टाइम में हम सबने महसूस किया है और उस चीज को उसी पैटर्न में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने सारी अपनी बात रखी, वो बात हम सबको सोचने पे मजबूर कर रही है कि जंगल से आपको जमीन की जगह जमीन दी जाए, ऐसी चीजें आप वहां पे सारी मुहैया कराई जाएं ताकि वो अपने संस्कृति से भी जुड़े रहें। और हमारी संस्कृति जो है कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति और ये आपके समुदाय से ही आगे बढ़ती है, जो इंडिजिनस कल्चर को हम प्रोटेक्ट करने का चांस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूंगा आप सभी एक्सपर्ट की, कि उन्नत भारत अभियान बहुत हद तक आपके दिए गए सुझावों पे काम कर रहा है। द पार्टिसिपेटरी थिंग इज वेरी मच accepted and we have been doing it. Our mandate is to go to the last man of the society. हम यही कर रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं,
हम प्रयास करते हैं कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग करने के पहले हम गांव तक जाएं और वहां पे गांव के लोगों से इनपुट लें। हम यहाँ पे अपने ऑफिसेस में बैठ के अगर आपके बारे में या फिर आदिवासी के बारे में कोई निर्णय लेते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं, दैट्स ऑफ नो यूज। दिस इज आवर मैंडेट। हमारी आईआईटी दिल्ली के अध्यक्षता में हम ये काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत सारे संस्थान जुड़े हुए, लेकिन सबके साथ यही एक मैंडेट है कि आप गांव तक पहुंचे और गांव के बारे में जाने समझें, तभी हम कोई पॉलिसी मेकिंग में कर पाएंगे बात। और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे ये जो हम लोगों ने ट्राइबल इश्यूज के ऊपर जो वेबिनार किया है, ये भी एक उसी में कड़ी है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटी सी, आज आप लोगों ने बहुत सारी, हमारे तीनों ही स्पीकर्स ने many issues were raised and all the issues are noted, well noted, and we all have been thinking, but now with the comments and the the inputs given by our experts, we will be thinking on these issues in more explicit way. I think not only we all the listeners, even the government people, we all will be thinking on these issues. So with this very fruitful seminar, very fruitful talks, now I would like to open the stage for all the all the participants. If they want to ask, we have all the three speakers on screen. We have IIT Delhi team also on screen. All are visible to you. हालांकि ये चीज वेबिनार के माध्यम से आज हम पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। इस छोटे से वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हमें हर एक इंसान देख पा रहा है। एकदम आप, हम सब लोग बंगाल में बैठे हुए हैं, लेकिन कश्मीर में बैठा इंसान भी हमारी बात को सुन पा रहा है, देख पा रहा है। ये एक अच्छी चीज है जो कोरोना से हमसे सीखी है। और उसमें मैं अब ये ओपन करूंगा क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं, यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं हमसे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ऑल स्पीकर्स आर हियर। वैसे आप सब लोगों के टॉक्स इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, मतलब सारी चीजें, यू ऑल हैव एक्सप्लेन्ड almost everything in your talk. Things were quite clear, crystal clear. In all the three speakers talk, the things were quite clear, so I think there are no questions. But yes, we all are all. One question is from Professor Sasi sir कि जो संथाली भाषा इतना रिच है, संविधान के 22वीं अनुसूची में भी शामिल है, उसके बावजूद हम शिक्षण संस्थानों में संथाली भाषा में शिक्षा की अभाव क्यों देखते हैं? क्यों हम इस पे जो बच्चे चाहते हैं कि हम संथाली में पढ़े, विशेषकर झारखंड, बंगाल और बिहार में, वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं संथाली में हायर एजुकेशन? शशि सर प्लीज। थैंक यू सर जी, आपने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। तो देखिए, संताली जो लैंग्वेज है 2003 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल हुआ है। तो देखा जाए कि बंगाल की सिवा किसी भी स्टेट में संताली लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को सही मायने में शिक्षा क्षेत्र में अभी तक ओपन नहीं किया। केवल मात्र बंगाल में ही ऐसा सिस्टम चल रहा है जहां केजी से पीजी तक संताली लैंग्वेज ऑलचिकी स्क्रिप्ट में पढ़ने का मौका दे जा रहा है। और जो बात आपने कहा है कि क्यों इतना आदिवासी तो बहुत है, लेकिन क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, इनका कारण बहुत कुछ है। जैसे कि जो स्कूल और कॉलेजेस है, अगर आप देखेंगे तो जो आदिवासी क्षेत्रों में जितना स्कूल कॉलेज होना चाहिए था उतना नहीं है। ये पुरुलिया में एक भी कॉलेज नहीं है जिस कॉलेज में संताली मीडियम ऑलचिकी स्क्रिप्ट में पढ़ाई लिखाई हो रहा है। सब्जेक्ट की तौर पे यहाँ 12 कॉलेज में है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन जितना स्कूल कॉलेज होना चाहिए उतना स्कूल कॉलेज नहीं है। दूसरा बात, जितना वो जो परसल बाबू ने बहुत अच्छा कहा है पहले, जो किताबें होना चाहिए वो सफिशिएंट किताबें नहीं है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही मायने में नहीं है। तो और उसके साथ साथ हम देखेंगे तो जे संताली मीडियम और लैंग्वेज लेकर पढ़कर क्या क्या सुविधाएं मिल सकता है, क्या क्या फैसिलिटी पा सकता है, इसके संबंध में सही ज्ञान
अभी तक आदिवासी समाज में विकसित नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। अब बंगाल में बहुत स्कूल कॉलेज बन गए हैं। हम आशा रखते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी बनेगा, और धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी संताली लैंग्वेज लेकर और भी ऊंचा पढ़ाई में निवेश होगा। ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी तक वो जो परिकाठामो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, किताब जो चाहिए, टीचर जितना चाहिए, ये परिकाठामो का अभाव है। इसके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा हो रहा है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे, बंगाल में श्रीपति जी है, संताली लैंग्वेज का प्रोफेसर है, इसकी व्यू में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहा है। स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, और नेट सेट भी क्लियर किया है। तो ये पहले थोड़ा तो पहले तो थोड़ा दिक्कत आएगा, और विश्वास है धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा इन संताली भाषाओं में, आदिवासी लैंग्वेज में आदिवासी समाज की जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो धीरे धीरे इनमें और ज़्यादा योगदान करेगा, ऊंचा पढ़ाई में वो आएंगे, ये विश्वास है। नमस्ते जी। यूट्यूब पर एक क्वेश्चन है अमित गहलोत जी का। इज आस्किंग कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के जो भी रिचुअल्स है इन अलग अलग ट्राइब्स में, वो लिस्ट कहाँ मिल सकता है? कुछ ऐसा कोई वेबसाइट है क्या, या कुछ सच है? हाँ, ऐसा कोई संकलन अगर हुआ हो, क्योंकि अभी मैं कल एक YouTube वीडियो देख रहा था, उसके अंदर मुर्मू जी, किशकू जी, सबसे ही ये मैं शेयर करना चाहूंगा। और शायद एक सवाल भी इसमें आया है YouTube पे कि ट्रेडिशनल इंडिजिनस कल्चर या संस्कृति क्या है। तो आई वॉज astonished to see one YouTube video. I don't remember the exact reference of that video, पर उसमें क्या था कि the anchor was talking about the patent of हल्दी एंड नीम। जो हल्दी और नीम हमारी सनातन संस्कृति से हम यूज करते आए हैं, इंडिजिनस जो अगर हम कहें तो दैट इज इंडिजिनस थिंग, कि अगर कहीं चोट लगी, कहीं एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो ये नीम का हम यूज करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं। इसको आज के परिवेश में, इस मॉडर्न कल्चर में, आज के साइंटिस्ट ने, कुछ विदेशों के साइंटिस्ट ने उन्होंने पेटेंट करा लिया है। तो ये इस तरीके की जो चीज हमारे लिए एकदम जैसे है कि इट्स बट नेचुरल, इट्स लाइक जैसे कि शीशे पे देखने के बाद आपका चेहरा आपको दिखता है, ये हम जानते हैं। अब कल पता चले कि इसको भी किसी ने पेटेंट करा लिया कि शीशे में अगर आप देखेंगे आईने में तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा। तो हमारी यही कल्चर है, यही संस्कृति है। तो हालांकि वो हमारा आज विषय नहीं है, लेकिन विषय ये जरूर है कि हम जो हमारे इंडिजिनस कल्चर है, हम आप इसको कैसे बचाएं, क्योंकि बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने बहुत सारी, जैसे जो म्यूरल्स की बात आप कर रहे थे कि जो लेकिन खैर सवाल शायद आप हमारे एक्सपर्ट से था, और मैं राहुल जी के सवाल को आप लोगों के बस वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्या ऐसा कोई संकलन है जहां से, क्योंकि इन संकलनों की जरूरत है, उन चीजों को सामने लाने की जरूरत है। आज जैसे वेबिनार में आज के आपके कुछ थॉट्स एक संकलित हुए हैं, तो उसी तरीके से अगर आप लोग कुछ किताबें पब्लिश करें, और तो उन पे हमें एक वो कलेक्शन मिल पाएगा, ताकि हमारी आज की जनरेशन जान पाएगी। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या? मुर्मू जी क्योंकि साहित्यकार भी हैं, उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, फिल्म भी किया है, तो आपके देखिए सर, ऐसा तो अभी तक मेरे नज़र में आया नहीं कि देखिए ट्राइबल ट्राइबल बहुत सारे ट्राइबल है इंडिया में। 705 टाइप का ट्राइबल है। अब बंगाल में 40 प्रकार का ट्राइबल है। तो इतने सारे ट्राइबल का जो पूजा पद्धति है, रिचुअल जो सिस्टम होता है, क्या कह सकते हैं उसको हम, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, वो एक ही किताब में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो संताल का है, जो मुंडा का है, जो हो का है, ऐसा बहुत सारे किताब है जिनमें जिस किताब में ये विशेष ट्राइबल संप्रदाय का जो रिचुअल है, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो अगर मेरे पास पीछे देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी किताब है जहाँ आदिवासी जनजातियों का
अलग अलग किस्म का जनजातियों का जो सिस्टम होता है, जो आप जानना चाहते हैं, वो अलग अलग किताब में जरूर है, लेकिन इसको एक साथ में एक ही किताब के अंदर अभी तक संकलित नहीं किया गया। अगर ये कोशिश लिया लिया जाएगा तो ये बहुत बढ़िया होगा सर। अगर आप ऐसा कोई सोच रखते हैं कि चलो सब आदिवासियों का जो सिस्टम है, जो उनका धार्मिक सिस्टम है या सोशल सिस्टम है, कल्चर है, सब कुछ एक ही किताब में संकलित करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक मेरे नज़र में नहीं पड़ा, लेकिन है अलग अलग किताब में ऐसा बहुत सारे किताब है जहाँ लिखा हुआ है आदिवासी जो समुदाय है उनका रीति रिवाज, जीवन शैली, उनका सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक किताब में अभी तक नहीं आया। जी, बिल्कुल। अभी तो कोशिश किया यहाँ बंगाल में, धीरेन्द्रनाथ बास्के उनका किताब है आदिवासी समाज, वहाँ श्रीपति जी और अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जाति गोष्ठी आदिवासी है, उनका विवाह का सिस्टम, उनका उनका जन्म मृत्यु का जो सिस्टम है, उनका पूजा का पद्धति लिखा है। एक किताब है लेकिन वो छोटा है, पर उसमें लिखा है आदिवासी समाज, धीरेन्द्रनाथ बास्के की लिखा हुआ है, उसमें है। ठीक है, टुडू सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हमारे सर दूसरे यहाँ बंगाल में जैसे शशिकांत मुर्मू जी बोल रहा था कि बंगाल में 40 प्रकार के आदिवासी है, लेकिन उससे मैं तो संताल्स में बिलोंग करता हूँ, तो संताल के जो रिचुअल होते हैं, जो उनका कल्चर होते हैं, उसके बारे में बहुत सारे किताब है। संताली में लिखा है, बंगाली में भी कुछ भी लिखा है और इंग्लिश में भी कुछ है। मान लीजिए पीओ बोर्डिंग, येलो स्क्रैप्स मिशनरीज थे, उन लोगों ने पहले उनको कलेक्ट किया और उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश किए हैं, वो मिल जाएगा यहाँ बंगाल बिल्कुल में। ठीक है, तो हम आगे भी इस पे ध्यान रखेंगे कि कैसे ये पब्लिक डोमेन में लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जो लोग एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं कम से कम वो उन तक रीच कर पाए और उसको समझ पाए। धन्यवाद। और इसके अंदर क्योंकि ये जो और पहल है इस समय, मैं एक बार फिर से ध्यान लाना चाहूंगा सभी श्रोताओं का और सारे यहाँ पे जितने भी हमारे उन्नत भारत अभियान की टीम जुड़ी हुई है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव में जो हमने उन्नत भारत अभियान के तहत ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसके अंदर और भी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं जो कि एक संकलन का, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तरीके से हमने ये आइडिया जनरेट किया है आप सब श्रोताओं की मदद से और स्पीकर्स की मदद से। तो ये जो संकलन की बात एक उठी है यहाँ पे, मुझे लगता है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में, जो कि अभी कुछ महीने और चलेगा, आप लोग अगर ये करें, मतलब संकलन के बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं, तो अगर हम किसी फंडिंग के लिए ट्राई करें और इस पे अगर ये किताब निकल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा हमारी संस्कृति को संजोए रखने के लिए। तो ये बहुत ही एक तरीके से ये सफलता है हमारे इस वेबिनार की और आप सब लोगों के स्पीकर्स की। तो इसके साथ मुझे लगता है कि अगर शायद चक्रभूषण जी भी कुछ पूछना या बोलना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि वास्तव में जो ये वेबिनार है, अंडरस्टैंडिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंडिजिनस कल्चर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं और इस वेबिनार का मकसद ही यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारे भारत के इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनके बारे में जो रिसर्च हो रही है वो एनआईटी, आईआईटी और आईएम जैसे संस्थान में भी हम बहुत बड़े स्तर पे करना प्रारंभ करें, क्योंकि इन संस्थानों में रिसर्च तो बहुत अलग अलग चीज़ों, टेक्नोलॉजी और अलग अलग डेवलपमेंट पे हो रही है, पर कहीं ऐसा लग रहा है कि हम इंडिजिनस कम्युनिटी के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो हम यहाँ ऐसे संस्थानों में, जो भारत के उच्चतर संस्थान है, जो दुनिया भर में अब अच्छा नाम कमा रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, वहाँ भी आदिवासी समुदाय के बारे में सोचना, रिसर्च करना प्रारंभ करें। इनके जो स्ट्रेंथ है, जो रिसोर्सेस है, वो हम आइडेंटिफाई करें ताकि लोग उस तरफ रिसर्च के प्रति एक टॉपिक ले सके, और जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं वो भी सब तक पहुंचे उच्चतर संस्थानों में। तो हमारा ये मकसद ही है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक भी आया है कि लोग ऐसे विषय को संकलन एक किताब में करें, जो इनके इंडिजिनस नॉलेज को अलग अलग बुक में अभी उपलब्ध है, उसको हम एक किताब में ला के रखें। तो ये बहुत अच्छी, इस वेबिनार के माध्यम से ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं सर।
सर आप सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो हाँ। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा YouTube के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, उसको देख के लग रहा है कि हाँ, जैसे किसी भी श्रोता और किसी भी जो परफॉर्मर स्टेज पे रहता है वो देखता है कि तालियां कितनी बज रही हैं, तो उस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे वक्तव्य रहा उसको मैं देख रहा था यहाँ पे, वो देख के मुझे लग रहा है कि हम एक सफल वेबिनार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों को सुनना, और हमारे ये मैं श्रोताओं की तरफ से बोल रहा हूँ, और जो हमारे YouTube के लोग थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ मुझे लगता है कि अगर और कोई सवाल, हम आखिरी सवाल ले सकते हैं, अगर किसी का आखिरी सवाल या कोई कमेंट हो तो देन वी विल रैप अप। सर वो जो हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये है, इसमें पश्चिम बंगाल के जितने ट्राइब है उनका परिचित, उनका रीति रिवाज लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का हाँ। ये किताब इंग्लिश में भी है, ट्राइब्स ऑफ वेस्ट बंगाल बाय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बास्के, वो बंगाली में है और इंग्लिश में भी है। ट्राइब्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, उस बुक को हमें कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया पे लेके आना पड़ेगा कि इजी टू एक्सेस हो जाए लोगों को, ताकि जो भी लोग है, जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं उसको पढूं, तो मेरे लिए एक्सेसिबिलिटीज हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूट्यूब पे कमेंट्स आपने अभी बात की सर ने, कि कमेंट्स में भी लोगों ने अप्रिसिएट किया है और लोगों ने रीच करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। तो और ये हम आगे की जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो डायरेक्टली उन्नत भारत अभियान के थ्रू आगे के ऑफिशियल्स हैं, वो इनसे कनेक्टेड हैं जो स्पेशली, तो उन तक भी ये बातें पहुंचाई जाएंगी। तो होपफुली बहुत जल्द इस पे कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, फिर इस कमेंट के साथ अब हम इस वेबिनार को, we are just on the verge of concluding this webinar. So on the behalf of IIT Delhi, NIT Durgapur, I request all the speakers to work more on these things so that we will be knowing, we will be just updating ourselves on the tribal issues. This is a request, and with this request I would like to conclude this webinar, and I would like to thank IIT Delhi, NIT Durgapur and all the audience. Thank you very much for attending this very important and pertinent webinar. Thank you everyone. Thank you everyone. Namaste. जोहार। Johar. जोहार। Johar.